of you, welcome back to another video on Arsh Bynams, and in today's video we are going to discuss another question from your microbiology BSc semester 1. And the question is contribution of Louis Pasteur in the development of the microbiology. Now before I proceed ahead with the video, there is one thing I would like to tell you guys, that ये जो हम videos बना रहे हैं, that is only to help you to score good marks in your theoretical examination. But if in case you're preparing for some entrance examination, along with this you should always follow some good author books, because a detailed deep knowledge is more required to crack your entrance exam. अगर आपको concept clarity चाहिए, definitely follow this video. Theory exams में अच्छे marks लाना है, you can definitely follow this video. But apart from this, entrance exam के लिए और author के books आप पढ़ोगे. And along with this, जो भी आपकी microbiology teacher बोलती है आपके class में, you should follow that as well. Okay? So let us start with the video now. So we are going to discuss contribution of Louis Pasteur in the development of the microbiology. पहले हम list बना लेते हैं that what did Louis Pasteur actually developed in the area of microbiology. He is known as the founder of microbiology. ये तो बेटा भूलना नहीं. He is founder of microbiology. Important है. Now he successfully cultured Staphylococci in the liquid media. Now liquid media is otherwise also called as nutrient broth. In nutrient media, if we don't add agar, that doesn't get solidified, and that liquid media is otherwise also called as broth. तो पहली बारी लुईस पास्चर ने स्टेफाइलोकोकाई को न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करा था. Okay. Then next he explained about fermentation, Pasteur effect, pasteurization. He disapproved spontaneous generation theory. He explained about germ theory of diseases and also helped in the development of the vaccination. तो अभी ना ये जो पॉइंट्स मैंने टिक कर रहे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द फर्मेंटेशन प्रोसेस. Now what exactly is fermentation? A fermentation is the process which is happening in anaerobic condition. Now what do I mean when I say anaerobic condition? That is clearly in the absence of oxygen. For this process to happen, oxygen should not be present. Okay. Now what exactly is fermentation? Let us understand. Now this is a complex molecule. Now this complex molecule will be broken down into the simple molecules. Now this conversion of a big molecule into smaller molecule will be possible because of few organisms like yeast. बहुत सारे organisms है जैसे कि बैक्टीरिया है ल्यूकोनोस्टॉक, that also helps in fermentation. तो बहुत सारे ऐसे examples है, but one classic example is yeast. Okay, and during this process, this is the organism which will produce alcohol. This will develop alcohol, and along with that this will also release carbon dioxide. एक example मैं आपको बताती हूँ. bread preparation में, bread preparation is only possible because of fermentation. And now bread is soft and porous, right? bread थोड़ी घट होती है. bread is very soft and porous. So the soft and porous nature of the bread is because of the alcohol and carbon dioxide only. So this is what happens in the fermentation, where complex molecule is being broken down into the simpler ones, and ultimately during this process they are releasing ethyl alcohol and carbon dioxide. One such organism is yeast. ये important points है, you can just mention it. अगर आपको diagrammatically represent करना है तो ये diagram भी आप डाल सकते हो, because what happens is whenever you write your theoretical examination, the corrector, whoever is correcting your paper, will not have enough time to go through all the whatever the things you have written in the paper, like every word and statement and all. अगर आप उसको diagrammatically represent करते हो, the very first thing what paper setter, the paper corrector would check is the diagram. अगर diagram correct है, उसको idea मिल जाएगा कि you know about the answer, you have clarity about this concept. तो वो पढ़ेगा नहीं, वो आपको directly marks दे देगा. Generally this is what happens. Okay, but luck पे भी depend करता है. अगर paper setter के पास बहुत time है तो वो line to line भी पढ़ सकता है. तो this is all about luck. तो always it is suggestible in theory examination that whatever knowledge you have, try to put it in the cyclic form, एक flow chart के form में, diagrammatic form में. That would really help you to score very good marks. Everything what I wrote theoretically in one diagram I have explained. So why not to draw the diagram? This will really help you to score very good marks in your theory exam. Okay. Now, next is Pasteur effect. Now that we understood the fermentation process, as we discussed that this is something happening in absence of oxygen, Pasteur effect tells us that fermentation can be stopped. If I want to stop the fermentation, oxygen concentration should be increased, because fermentation is happening in the absence of oxygen. अगर मेरे को fermentation को रोकना है, मैं oxygen को बढ़ा दूंगी. I will increase the concentration of the oxygen. Now fermentation, which is anaerobic respiration, anaerobic process, this will stop, and in the presence of oxygen, instead of anaerobic process, aerobic process will start. So anaerobic respiration is stopping and aerobic respiration is starting.
क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो फर्मेंटेशन रुक जाएगा और एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट पास्चर इफेक्ट. फर्मेंटेशन एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. पास्चर इफेक्ट टेल्स अस हाउ टू स्टॉप फर्मेंटेशन बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. नाउ नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन. अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा. उस टाइम पे ना ये इसको डिस्कवर करना ही बहुत बड़ी बात थी. ओके, बट ये अभी तो हम रेगुलर लाइफ में भी यूज ही करते हैं. Like, what is pasteurization? Heating the liquid at more or less like around 60 degrees Celsius to kill disease causing microorganism. हम दूध भी गर्म करते हैं, राइट? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, लिक्विड यूज कर रहे हो, स्पेशली लिक्विड फॉर्म में, उसको आप गर्म कर दो तो उसमें के डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मर जाते हैं. ओके, ये डिस्कवरी लुइस पास्चर कैसे कर पाए? एट दैट पर्टिकुलर टाइम देयर वाज दिस वाइन इंडस्ट्री which was producing wine. Then at that time they came to know that there was wine contamination happening और सारी wine खराब हो रही थी. Because of wine contamination, wine was getting sour. समझ आ गया? तो एट दैट टाइम लुइस पास्चर वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटामिनेटेड वाइन एंड ही केम टू नो द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड. दिस लैक्टिक एसिड फ्रॉम वेयर डिड इट कम? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल एक्शन. Then that is how he came to know that the liquids can get contaminated by different microorganisms and those microorganisms can be killed by heating it. So that is how the pasteurization discovery happened. Okay. नेक्स्ट, जर्म थियोरी ऑफ डिजीजेस. अब जर्म थियोरी ऑफ डिजीजेस का किस्सा बड़ा ही सिंपल है. देखो, सिल्क इंडस्ट्री था. सिल्क इंडस्ट्री का काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सिल्क, अच्छी क्वालिटी सिल्क प्रोड्यूस करना. ओके, नाउ इन सिल्क इंडस्ट्री सिल्क वर्म्स चाहिए होते हैं. सिल्क वर्म्स आर प्रेजेंट. सिल्क वर्म्स विल ले देयर सिल्क एग्स, है ना, दे विल ले देयर एग्स. Now this silk eggs will again get converted into new worms and more number of worms. When we have more number of silk production will happen. But here there was the problem. The problem was the silkworm eggs were getting contaminated. And when the silkworm eggs are getting contaminated, तो productivity भी तो loss होगा ना. So there was very huge loss that the silk industry was experiencing. So that was the time Louis Pasteur tried understanding कि what is the reason that the silkworm eggs are getting contaminated. Then he came to know at that, while understanding that process, he identified the disease causing microbes in the silk industry. So he came to know that there is some organism which is contaminating the eggs and that is why the productivity is decreasing. Next, he prevented the contamination of silkworm eggs. When he understood the disease causing microorganism, he actually saved the silk industry, we can tell. Because अगर वो नहीं होते तो ये समझते कोई भी नहीं था ना उस टाइम में. लुइस पास्चर कर पाए तो कॉजिंग जो भी माइक्रोब जो डिजीज कॉज कर रहा है वो समझ पाए एंड देन ही केम अप विद सम ट्रीटमेंट ऑफ दैट. ओके, तो अल्टीमेटली व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस जर्म थियोरी ऑफ डिजीजेस, देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट ही पुट फॉरवर्ड. दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज इलनेस. वी ऑल नो दैट. अब प्रेजेंट डे में तो छोटे छोटे बच्चे को भी पता होता है, जो 6th क्लास में 7th क्लास में, ये बेसिक चीज है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इलनेस कॉज करते हैं, डिजीजेस एंड इन्फेक्शन कॉज करते हैं. एंड दीज डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. बट दैट टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक थिंग वाज अ ह्यूज थिंग, बिकॉज किसी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पता नहीं था. उस टाइम पे ये बोलना कि कोई चीजें हैं जो हमको दिखती भी नहीं है एंड दे कैन कॉज इलनेस, तो मेकिंग दिस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड टू ऑल अदर पीपल वाज एक्चुअली अ ह्यूज टास्क. तो उस टाइम पे दिस वाज अ मेजर डिस्कवरी. अभी हम सबको पता है ये चीज है. ठीक है, नेक्स्ट, ही डिसअप्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली स्पॉन्टेनियस जनरेशन? स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि उस टाइम पे कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे, देयर वर फ्यू पीपल हु वर टेलिंग दैट कि एनी नॉन लिविंग मैटर, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने मीट का एक पीस रख दिया है ना, आई जस्ट केप्ट द पीस ऑफ मीट. If I just leave the piece of meat just open like that, after certain times you will see that there are small worms which will grow on the meat. ये हमको पता है ना, कोई भी खाने वाली चीज अगर आप ओपन रख देते हो, that will get contaminated and the organisms will start growing on that. We all know that, isn't it? यहाँ पे scientists were telling that this meat is what? A non-living component. Non-living component is giving rise to living component. ऐसा उन सबका मानना था. But Louis Pasteur disapproved that. Louis Pasteur told non-living component cannot give rise to any living organism. This cannot happen. So living organisms are coming from already existing organisms. ये कैसे वो explain कर पाए? Via swan neck flask experiment. तो what is this swan neck flask? He performed this experiment in 3 steps. Steps नहीं है, 3 times उन्होंने ये perform किया. Scene 1, Scene 2 and Scene 3. Now in Scene 1, he took this flask
विथ स्वान नेक. अब ये देखो इसका नेक कितना बड़ा है ना. द नेक ऑफ दिस फ्लास्क इज लाइक एस शेप and this is quite long. Okay, then he took the nutrient media, the nutrient broth into that flask. He heated it completely. क्यों हीट किया? अगर उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स भी है वो मर जाए, पैस्चराइजेशन ही समझ लो. ठीक है, कोई चीज को हीट करना ताकि उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाए. तो न्यूट्रिएंट मीडिया को उन्होंने लिया, विच इज अ ब्रॉथ, लिक्विड मीडिया, उसको हीट कर दिया. ही लेट द फ्लास्क टू सेटल, उसको कर दिया. एंड देन आफ्टर सर्टेन टाइम ही नोटिस दैट देयर इज नो बैक्टीरियल ग्रोथ. मतलब ब्रॉथ इज लाइक विदाउट एनी बैक्टीरिया, है ना. Then in scene 2 what he did, he again took the same flask, he heated it. This time what he did, he cut the neck of the flask. कि मतलब जो भी उसका एस शेप का नेक था ना उसको कट कर दिया. नाउ व्हाट ही नोटिस दैट हियर इन दिस सीन बैक्टीरियल ग्रोथ इज हैपनिंग. सो व्हाट ही वांटेड टू कन्वे दैट व्हाटएवर द एयर इज प्रेजेंट, that air directly entered into the flask and this air were having microorganisms were present in the air. Those microorganisms could contaminate the nutrient broth and hence bacterial growth was seen. Then in the third scenario he confirmed it. How did he confirm? He took that same flask again, फिर से उसको heat कर दिया, but this time he didn't break the neck of the flask. Neck वैसे ही है. Now his concept was, why did he choose only that swan neck flask? Why only this S-shaped neck? Reason being, he told through this neck air is trying to enter. But just because the shape of the flask is in such a way that air could not completely cross the S-shaped neck and somewhere till only that specific point the air could travel. है ना. तो उनका मानना ये था कि till this particular point only the air could travel and only organisms could enter up to only this particular point. They could not reach the broth as such. So hence in the third scenario he proved it. How did he prove? This time without breaking the neck of the flask, he tilted the flask. He tilted in such a way that the nutrient broth will come in contact with the area of the neck where air could enter, जहां तक भी एयर ट्रैवल कर पाया. एंड देन ही अगेन केप्ट द फ्लास्क स्ट्रेट एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही कुड सी बैक्टीरियल ग्रोथ. एंड हेंस ही टोल्ड दैट नॉन लिविंग मैटर लाइक न्यूट्रिएंट ब्रोथ इज नॉट गिविंग राइज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. When this nutrient broth is coming in contact with the air which is carrying microorganism, then only the nutrient broth is getting contaminated and hence bacterial growth is seen. That is what he concluded here, that contamination of the media only occurred upon exposure to the outside environment. Until the broth was not getting exposed to the environment, there was no contamination seen, no bacterial growth seen. Simple. So ultimately the output is new organism arise from the pre-existing organism which are already there. They are not coming from non-living matter, they are coming from the already existing living matter. Simple. ठीक है, ये हो गया, उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया स्पॉन्टेनियस जेनरेशन थियोरी को. नाउ नेक्स्ट इज ही हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन एज वेल. ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. ही हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रैक्स वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन एंड ऑल्सो कॉलेरा वैक्सीन. Let us understand how he helped in cholera vaccine preparation. देखो यहाँ पे he took cholera. Now this cholera is without any changes, मतलब raw cholera. अगर मैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी के अंदर ट्रांसफर कर दूं, इंजेक्ट कर दूं, this can cause infection. This will cause cholera infection. Okay, and on the other hand what he did, he made vaccine out of this cholera. He took a little bit of cholera, he made changes in that cholera. The changes will be made in such a way that cholera will not, when cholera enters, when this cholera is injected into some other organism, it will not kill the organism, it will just try to develop that immune response. कि मतलब ये जो organism है जो infect without any changes, if this organism is entering into some other organism like cholera, if it is infecting some other organism, because of the development of the cholera the organism may die. Now what we are doing during vaccine preparation, वही cholera I am taking और उसी cholera को मैं changes कर रही हूँ. We call it as attenuation. Now what is attenuation? Making changes in the disease causing organism in such a way that it will not cause disease but it will generate immune response. कि मतलब the blue color one is the changed one. cholera को थोड़ा सा हमने change कर दिया. ठीक है. So this will, when this is injected into some other organism, this will develop immune response. ये ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज नहीं करेगा, ये इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा. दिस इज द होल कॉन्सेप्ट. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा. नाउ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देती हूँ, जूम आउट करके बताती हूँ. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ ही टुक चिकन्स. ठीक है,
case 1 and case 2. Let us understand in two cases. Now in case 1, what he did, he took raw cholera without the changes. He took raw cholera and he just injected cholera into this chicken. कि मतलब ये कॉलेरा का जो फ्रेश कॉलेरा है, रॉ कॉलेरा है, जो डिजीज कॉज करता है, ही इन्फेक्टेड दैट इनटू दिस चिकन एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस रॉ कॉलेरा दिस चिकन एक्सपीरियंस द इन्फेक्शन. यहाँ पे कॉलेरा का इन्फेक्शन हो गया था, इसको इन्फेक्शन हो गया एंड दिस चिकन डाइड. ये मर गई, डाइड. ओके, नाउ इन केस 2, in scenario 2, what he did, instead of infecting the raw cholera, he took the attenuated form. मतलब जो cholera में हमने changes करवाए, the changes are in such a way that it is not going to kill the chicken, but it is going to develop the immune response. Antibodies produce कर देगा उस chicken में. ठीक है, अब ये चिकन पे एंटीबॉडीज आ गए. ये ब्लू कलर वन रिप्रेजेंट एटीन्यूएटेड फॉर्म एंड दिस विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज डेवलप कर देगा. ठीक है, अब फिर उन्होंने क्या किया, इन दैट सेम चिकन वेयर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, ही इंजेक्टेड द फ्रेश कॉलेरा विदाउट द एटीन्यूएशन. ओके, when he injected the fresh cholera, what he noticed was this chicken didn't die, it was living. Because there was no infection seen. Why no infection? Because already जो हमने attenuated वाला cholera इसमें डाला था, this developed antibodies. So in future, if this same chicken is infected by the fresh cholera without any changes, the raw cholera, that antibodies are already there to fight against that cholera. So ultimately the immune response what is generated, that is protecting this chicken from the cholera infection. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट. हम सब जो वैक्सीन लेते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. जो हम वैक्सीन लेते हैं, लाइक पोलियो का वैक्सीन हो गया, बहुत सारे वैक्सीन हो गए, हम क्या करते हैं, हम एटीन्यूएटेड सेम जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थोड़े से चेंजेस करके हम वही इंजेक्ट करवाते हैं बॉडी में. तो हमारा जो बॉडी है अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी हम फिर से हमें ना हमारे अंदर वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर पाए, तब we already have antibodies to fight against that infection. So we are just preparing ourselves so that in future, if by chance अगर वो infection हो, our body should be at a position to fight against that disease causing microorganism. So this concept was of cholera. तो यही उन्होंने समझाया है कि वैक्सीन प्रिपरेशन हम वही ऑर्गेनिज्म से करते हैं. We can prepare it by just making some small little changes and this we call it as attenuation, altering the disease causing organism that will develop antibodies, so that in future if the same organism enters into that disease causing organism will enter into the chicken with antibodies, no infection will be seen because antibodies will fight against the disease causing microorganism. But without this antibody development, if directly I am injecting the raw cholera, here the chicken is dying. तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया और दैट इज हाउ ही डेवलप्ड एंथ्रैक्स, रेबीज एंड कॉलेरा वैक्सीन. So I hope the class was clear, the concept and all are clear. So that's it in this video. Now in the next video, we'll be covering another question from microbiology again. I hope it was helpful and all of you all the very best and take care. Bye bye.